92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे कृतिका। और आज वही सीरीज की बात होने वाली है जिसको लेके ऑलरेडी सोशल मीडिया पे धमाका मच चुका है। सब लोग यही पहले ट्रेलर देख के पूछे थे कब आएगी कब आएगी कब आएगी। एक दिन पहले ट्रेलर रिलीज हो चुका है, 17 जून को ये रिलीज होने वाली है। और सबका सवाल यही है कि बस जल्द से जल्द आए और इस बार क्या चेंज दिखने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स अदिति ने इसमें एक लाइन कही है जिसको लेके सब बहुत एक्साइटेड है कि मैं चेंज हो रही है। सो वेलकम टू बिग एफएम ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? We're good. Yeah, we're good. Thank you. How are you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। तो सबसे पहले आप सबसे जानना चाहूंगी मैं कि कितना मजा आया सीजन 2 शूट करते हुए। टेल अस अबाउट बिहाइंड द सीन मोमेंट्स। वेल आई थिंक जैसा भूमि चेंज हो रही है बोल रही है वैसा बहुत कुछ चेंज होने वाला है उसके आसपास. You know, it's like that. So there is a lot of, I think, excitement, action, and a lot that Bhumi is going through this time, where she is going to be seen in at many intervals. You'll see Bhumi change for that spur of the moment, I would say. You know, she's not planning it, but it's happening to her automatically, and that's what I think Bhumi is made of. That she's not. She even says in the first season that मैं plan नहीं करती है, कर डालती है, फिर देखती बैठती है क्या हो गया मेरे साथ. So I think that's what Bhumi is going to be doing even now, and there are these two wonderful co-actors of mine who are supporting me so well. So I think you can please go ahead. सारे कैरेक्टर्स ही इतने पावरफुल हैं। मैं ऑफ कोर्स मेंशन करना चाहूंगी कि भूमि, जब आपकी अप्स एंड डाउन्स उसमें थे, रोलर कोस्टर राइड जैसा लग रहा था, हम लोग खुद मतलब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर जैसे अगर मैं विश्वास की बात करूं, वो बीच में फोन कट कर देते हैं कि नहीं अभी देखते हैं, तो हमको हमारे बॉस वाली वाइब्स आ रही थी कि अच्छा बॉस भी ऐसे ही सोचते हैं, प्रॉपर मैनेजर भी यही सोचता है कि ठीक है आने दो उसको, फिर बाद में काम देंगे। तो विश्वास, टेल मी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या क्या तैयारी लगी आपकी इसमें? यार काफी तैयारी लगी. एक तो लॉकडाउन लगा, सेकेंड लॉकडाउन था हमारे शूट के बीच में. सो वी हैड लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड सच अ ह्यूज गैप व्हाइल आई वाज शूटिंग समथिंग. और बिटवीन सीजन 1 एंड सीजन 2 पूरा फर्स्ट लॉकडाउन था. तो बहुत, मेरा ख्याल हम सबकी एज एक्टर्स फ्रॉम द टाइम वी शॉट द फर्स्ट सीजन टू द टाइम वी फिनिश द सेकेंड, it's a very long gap. So we've all, I think, grown a lot as a person, and as actors also. So for season 2, like, I had to completely relook at Fernandez because I had changed a lot through the first lockdown. So I was a new person with, like, we'd been through so many ups and downs. मगर शूट करने में मज़ा बहुत आया. This time I think I was much more in control of myself. And I had a lot of fun working with Bhumi this time. Like, she was much more powerful, and the graph that she has in the show is incredible. So जितना incredible वो है उतना challenging मेरे लिए था. ज़्यादा बता नहीं सकते, इसलिए जो शो में हो रहा है उसके हिसाब से जैसे फर्नांडिस को वो डील करना है, बहुत चैलेंजिंग इमोशंस हैं फॉर फर्नांडिस टू गो थ्रू. तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब थोड़ा चैलेंज होता है ना एक्टर, तो फिर और मज़ा आता है काम करने में. करेक्ट। किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सीजन 1 में आपने इलीगल चीजें ऑफ कोर्स आप काफी सारी कर रहे थे, रियल लाइफ में आपने कभी कोई इलीगल चीज करी है? पता है अभी. I'll have to look back into my life again. Must have done a lot. कॉलेज के दिनों में बहुत कुछ होता था, लेकिन पता नहीं उसको इलीगल कहना चाहिए या एडवेंचर कहना चाहिए. पता नहीं. But we all tend to have a dark side to ourselves, whether we explore it or not. अभी थोड़ा यहाँ पे आके नायक के वजह से मैं भी कुछ एक्सप्लोर कर चुका हूँ. And it has been actually, I can assure you that it has been and it will be a wonderful watch, and it has been a wonderful journey for us. Thanks to the whole team. क्योंकि आप जो पूछ रहे थे प्रिपरेशन के बारे में, तो मैं सोच रहा था प्रिपरेशन तो पूरा टीम का हुआ था. मैंने क्या किया मुझे भी कुछ पता नहीं, क्योंकि I had a lot of challenges because coming from down south, language itself was because I had to speak proper Hindi, because this guy Nayak is well read, well learned, well traveled, so I can't just pass off as a South Indian. So challenges तो बहुत कुछ थे, but preparations टीम की तरफ से and मेरे को आर्टिस्ट के तरफ से बहुत कुछ था which helped.
कुछ बिहाइंड द सीन फन मोमेंट्स जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे सीजन 1 में जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया उसके बाद सीजन 2, क्योंकि आई एम वेरी श्योर सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में जब आप इतना मिलते हैं, इतनी रिहर्सल्स करते हैं, कंफर्ट लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ मजेदार सा किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के साथ? ये सब किस्से इसके पास होंगे, ये कुछ भूलती नहीं है, इसको सब कौन है याद सबसे रहता ज्यादा शरारती, कौन है आप तीनों में? है। पूरा इंटरव्यू के बाद भी आपको पूछना पड़ रहा है ये बैठी है ना यहाँ पे, और किसी शरारती की जरूरत ही नहीं भूमि है। तो एकदम शांत बैठी है। भूमि Exactly, yeah. Look at me. तूफान से पहले की शांति है। मैं बहुत शांत रहती है, मेरे ऊपर ये ऐसे ही करते हैं फर्नांडिस सर, यही प्रॉब्लम है। नो, आई मीन आई थिंक fun moments were so many that after a point we had to stop having fun because we realized that we are doing a very intense, serious thriller drama kind of thing, you know. So we have to stop fooling around. But with Vishwas, of course, there were so many times, and I remember sometimes there were some things that I was doing a particular scene, and he was so sweet that I was doing it, and then I realized I got lost in the scene. I didn't know what when I was. There's one scene where he's consoling me. And I got so lost in the scene that I didn't know where I was or what was I doing. And he was like, did I do something wrong? I felt like playing a prank on him at that time, but I thought, nahi yaar, next time ये करूँगी तो मुझे seriously नहीं लेगा as an actor. So, but yeah, there were can't put a finger on one thing because there were so many times that we while performing these scenes only. In fact, we've had lot of fun. I think with Nayak sir, there have been like in the last season there have been like lesser scenes than this time. So there were many times where we had to do switch characters for the part, and we had to do some things. Now it's very restricted, so we can't talk about it. But yeah, so there were many times when we were doing some things and then it's gone completely wrong, and then Arif sir would be like, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? And we were like, हाँ हम लोग क्या कर रहे थे? And the laughter would not stop. Like the scene actually needed the laughter, but after a point also the laughter did not stop. So I think हम लोग we were just flowing with what was happening in the characters also. So not particularly एक कोई incident बता दिया तो हम season का कुछ part बता देंगे आपको. So I तो think सीजन 1 के बारे में मैं पूछती हूँ आप तीनों का एज एन एक्टर सबसे फेवरेट सीन कौन सा रहा है जिसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले और पर्सनली आप लोगों ने भी काफी एंजॉय किया हो करना? I think अगर मैं अपनी बात करूँ तो that was the last scene where people saw the transition. आजकल आप बहुत सारा ट्रांजिशंस रील्स में देखती है, इंस्टाग्राम पे लोग कुछ कर रहे हैं. ये रियल लाइफ में हुआ था भूमि के साथ. सो आई थिंक एनी ट्रांजिशन गिव्स यू अ जोल्ट, गिव्स यू अ शॉक. But doing that transition for me also as Aditi, I remember that Imtiaz was there that day and he said, you know, everybody was very comforting both of us. And Imtiaz sir had told me that I understand you are in a situation where you have to play this part, but remember one thing, that the opposite sex, the man usually gets more intimidated. So make sure you take care of Kishore Kumar sir. And I was like, ये क्या बात हो गई यार, मेरा तो मतलब nobody is bothered about Bhumi. And he is a very sweet person. Yeah, totally. He's playing Nayak. Like first time I met him, मैंने पहचाना ही नहीं इनको, क्योंकि हमने पहले सीजन में कुछ साथ में शूट नहीं किया. तो हम फाइनली जब सेकेंड सीजन के लिए ऐसे रिहर्सल्स चल रही थी, कहीं क्लब में कुछ था, यहाँ पे एक जुहू में एक जगह है, वहाँ पे हम लोग कर रहे थे. तो मैं वहाँ गया और मैं पूरा एक्साइटेड ना कि सेकंड सीजन शुरू हो रहा है. तो मैं भगदड़ में इधर उधर भाग रहा, कोई सोफे से उठा और उन्होंने मुझे कहा, हाय हाउ आर यू. मैं मिला, मैं कहा हाय आई एम गुड. तो मैंने आईज देखी और मैंने कहा ये आईज मैंने कहीं देखी है, मुझे लगा कौन है, मैं पहचान नहीं रहा. तो इनके साथ वो हमारी कोई टीम से थी विंडो सीट से, उन्होंने कहा विश्वास दैट्स नायक. मतलब फॉर अ सेकंड आई गॉट वेरी एम्बैरेस्ड, बट देन आई रियलाइज्ड दैट इन पर्सन ही इज वेरी डिफरेंट. He's very different to the character that he plays. Completely different. And like that maybe is because of that only I was picked for this role because I look too normal. but that's a huge compliment, sir. Like hats off to you for. तो सर आपको कितना डिफिकल्टी हुआ? मतलब आप वैसे तो एकदम सिंपल से हैं, लेकिन आपने इसमें जो कैरेक्टर प्ले किया है सबको डर लग जाता है. जैसे आपकी एंट्री भी जब होने वाली थी तो लग रहा था कौन आएगा, फिर जब आप आते तब लगता है अरे ओ जबरदस्त पर्सनालिटी. तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? It was not that difficult. Just now I told that I was picked for this role because I don't look Nayak. Nayak was not supposed to look like Nayak because Nayak
आजू बाजू में इतना बिल्डअप होता है कि वो उसका एंट्री बहुत ऑर्डिनरी सा होना चाहिए एंड ही हैज़ टू लुक वेरी नॉर्मल, ही शुडंट स्टैंड आउट, वाज द क्राइटेरिया आई थिंक बिहाइंड चूजिंग मी. आई थिंक इम्तियाज़ अली जी हैड नॉट सीन एनी ऑफ माई परफॉर्मेंसेज और रोल्स. उन्होंने एक इंटरव्यू देखी थी मेरे फार्म में, उनको लगा कि ये ठीक रहेगा क्योंकि ये जो है दिखता नहीं है. So that was the main criteria, reason behind me being in this role. And it's wonderful to play such roles because you don't have to do anything. So it's quite easy. The way I do सेकेंड forming, सीजन do में तो लग nothing. रहा है बराबर से कि वाह, मतलब आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज लग रही है जो ट्रेलर देखा है उसके अकॉर्डिंग. वैसे भूमि, और आप भी मुझे बताइए विश्वास, कैसा एक्सपीरियंस है इम्तियाज अली के साथ दूसरी बार वापस से सीजन 2 में काम करने का? फर्स्ट और सेकंड एक्सपीरियंस में क्या क्या डिफरेंस आपको लगे दोनों सीजन्स में? पहले मैं बताता हूँ कि जब ये बताना शुरू किया इसने, फिर मेरी बारी नहीं आएगी क्योंकि ये इम्तियाज सर की बात करना शुरू करती है तो फिर सुनना पड़ता है अच्छे से. मेरे को आई फील I'll start from here that I've grown a lot as an actor since I started working with him. वो चलते फिरते स्कूल है फिल्म मेकिंग के, जिसको सीखना है वो बहुत कुछ सीख सकता है just by being around him. That's what I feel. And I feel when you sit with him and talk to him, you see that it's his creation, this whole world. And then he takes you in it, shows you who you are in this creation. And it was a beautiful journey from day one. Incredible. Working with him has been incredible for me. Up to both. What about you, Bhumi? Well, like he said, it's true, and I feel that if more than anything else, he's so liberal about his ideas that there is no stamp कि ये मैंने लिखा है या ये मेरी idea है, तुम इसे change नहीं कर सकती. You know, whenever we did a scene, it was always like a actor-director relationship. It was never that it's just a director who's directing you, you know. So whenever I did a scene, and if it did go somewhere else for that matter, it does hit some points where, as Aditi also have lived a certain life, and it comes from there, you know. वहाँ से कुछ memories है या कुछ ऐसे experiences है जो मैं character में automatically आती है. I'm not doing it consciously. So he would observe that, and he would tell me, look where it went, and it's nice. So let's keep this. You know, so there are nuances, like small things, like nuances in the character. If you see, even in the teaser that has come, she says, मतलब वो जो character है गाड़ी में जो बैठा है, she says, हाँ तुम चलो, अगर ये जाएगा तो मैं जाऊँगी, चलेगा क्या? And that चलेगा क्या में, there is a slight like this kind of thing. So these kind of things, Imtiaz sir has noticed that I have done, and he said, keep it. Otherwise, he would say, don't keep it. You know, because in small gestures and postures, a lot of things are expressed. So I think it's every time I had when the second season was announced that we are doing the second season, I was like more excited. More than shooting the season, I was excited that we are going to rehearse with Imtiaz sir, because there would be so much more explored as an actor, and I'm a very hungry actor. Like I want to learn more for that matter. I started with Makaran Deshpande, and I know that Imtiaz sir is also from stage. So there's a very different and how to say, like, जैसे अगर आप एक स्कूल में कुछ पढ़ते हो and you know that you have learnt from this school, you know that the teachers are from the same school, right? So that's what happens with Imtiaz sir or anybody who's from stage, that you know that this is the process, you know. We read it once, we read it twice, we do it, and every time we did it, he always gave me the liberty to probably, you know, put in my personality to it, and even if it went a little amiss, I would only be very scared and asking him, sir, ये सही है क्या, ये सही है या नहीं है, like can you please tell me? And I know one thing, that if the scene went well, he would be like, how was the scene? Good? Yesterday's scene was good? Okay. And I would know from his eyes that it was good and he's seen it, you know. So I don't really have to go and ask him कि sir ये कैसा था या अच्छा था या नहीं था. And always available for rehearsals, no matter what. Thank you very much. It was lovely talking to you. Thank you. Same here. Thank you And so much. all the Thank you. very very best. Second Thank you, season thank you. आया, अभी हम लोग देखेंगे उसे आराम से. थर्ड जी. सीजन जल्द से जल्द आए और वापस से इंटरव्यू करें और Thank उसमें you. फिर से नया अवतार आप लोग का देखने को मिले. All the very very best. Thank you. Thank So you. kind of you. Thank you. 92